हरियाणा के कैथल में रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला ने नगर परिषद के एक जेई और मैनेजर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। दरअसल इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में मिलने थे। जब पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए आए तो जेई तरुण और मैनेजर विशाल गुप्ता ने 25,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे। लाभार्थी ने तुरंत इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया। आज जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस जो नीति है, उसके तहत हमारे डीजी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में और हमारे एसपी पुलिस अधीक्षक कैथल अंबाला के मार्गदर्शन में एक जो मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत आज शिकायतकर्ता गुरबचन सिंह ने मेरे को फ़ोन किया कि मैं एक रेड कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, मेरे से रिश्वत की राशि मांगी जा रही है, मैं आपसे मिलकर शिकायत करना चाहता हूँ। तो मैं सुगुर मिल के पास अपने एक इंक्वायरी के संबंध में गया हुआ था, तो मैंने इसको वहाँ बुलाया, तो इसने मेरे को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें इसने कहा कि मैंने 3 से 4 साल पहले नगर परिषद कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान के लिए, जिसमें 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, उसके लिए आवेदन किया था। उस बारे में मेरे को मैं कई बार इनके विशाल है गुप्ता हैं जो SMID हैं, ये सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, मैनेजर की पोस्ट होती है, नगर परिषद में है। तो ये उसे मिला, ये कहने लगे अभी 26 तारीख को मैं तेरे पैसे डाल दूंगा। तो 26 को इसने 1 लाख रुपये उसकी पत्नी के खाते में डाल दिए, जो उसका नाम प्लाट हो जाए उसकी पत्नी के नाम था। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत जो भी कोई शिकायत करेगा किसी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ, उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुजरात के वडोदरा में योग शिविर का आयोजन किया गया। रामदेव महाराज के शिष्य लक्ष्मण गुरुवाणी और श्रीरंग राजेश आयरे के सहयोग से वडोदरा के सुभानपुरा क्षेत्र स्थित झांसी की रानी मैदान में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा महानगर के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुजरात योग बोर्ड के चेयरमैन शिषपाल जी, भाजपा वडोदरा महानगर के महामंत्री सत्येन कुलाबकर, आयोजित समिति के अध्यक्ष राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे और हेमलता गौर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर में बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने भाग लिया और योगाभ्यास का लाभ उठाया। शिविर के बाद सभी प्रतिभागियों को सात्विक आहार का भी सेवन करवाया गया, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। वहीं इस मौके पर विश्व वैष्णव किन्नर अखाड़ा के जगत गुरु हेमांगी सखी का स्वागत आयरे परिवार द्वारा किया गया। इस दौरान पूर्व काउंसलर राजेश आयरे और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वामी हेमांगी सखी का गर्मजोशी से स्वागत किया। हेमांगी सखी ने आयरे परिवार को आशीर्वाद दिया और गुजरात तथा वडोदरा में वैष्णव कार्यालय खोलने की योजना साझा की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी हेमांगी सखी ने वैष्णव किन्नर अखाड़ा परिषद की गतिविधियों पर जानकारी दी। मारी जन्मभूमि है, मारो जन्म आ वडोदरा शहर में थयुं अने बहु सौभाग्यशाली हूँ पोताने मानु छूं कि जीवन मारू किन्नरनो जरूर छे, मगर भगवाने मने ऑपॉर्च्युनिटी एवी आपी कि हूँ धर्मना पद पर चाली रही छूं। वैष्णव किन्नर अखाड़ा, आ नवो वैष्णव किन्नर अखाड़ानुं मैं गठन कर्युं अने 25 अमारा किन्नर समाजना लोकोने मैं एमने महामंडलेश्वरनुं पद आप्युं छे कि आगळ एमने शिक्षित करीने, दीक्षा दईने एमने शिक्षित करीने पूरा समग्र संसार में अमारा किन्नर भगवाननो नाम प्रचार करे अने उदाहरणनो स्तोत्र बने समाज माटे। एटला माटे हवे वडोदरामां पण बहु जल्द अमे वैष्णव किन्नर अखाड़ानो एक कार्यालय बनावीशुं। वडोदरा गुजरात एक संस्कारी भूमि है અને અમે બધા જોઈએ છે અને બહુ જલ્દ તમને આ પણ જોવા મળશે કે હું અહીંયા પટ્ટાભિષેક કરવાની છું અને આપણા મહારાજને એક અમે અહીંયા પટ્ટાભિષેક કરીને મહામંડલેશ્વર ઘોષિત કરીશું
અને પછી આગળ એમના નેતૃત્વમાં આ વડોદરામાં આગળનું કાર્ય થશે, જેમને હું અહીંયા ઘોષિત કરીશ અને આપ બધાને આમંત્રિત કરીશ જ્યારે હું પોતે મારી હાથેથી પટ્ટાભિષેક કરીશ આ ગુજરાત અને વડોદરાની પાવન ભૂમિ ઉપર. અને હું પોતે આગળ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું ગાન કરીશ. એ તમને જોવા મળશે કે કિન્નરના મોઢાથી ભગવાન નામનું સુમિરણ ભાગવતનું કથા એ વડોદરા ભૂમિ ઉપર હું કરીશ. કે વડોદરા શહેર એ સંસ્કારી નગરી છે, ધર્મની નગરી છે. આપણા ત્યાં આગળ અખિલ વૈષ્ણવ કિન્નર સમાજના પ્રમુખ છે અને જે જગતગુરુ સ્વામી હમાંગિનીબેન સખી પધરામણી માટે આવ્યા છે. गुजरात के अमरेली के धारी तालुका के एक स्कूल में शिक्षकों की कमी का मामला सामने आया है. अमरेली के धारी तालुका के गोपाल ग्राम स्थित कुमार स्कूल में शिक्षक की कमी की समस्या सामने आई है. यहाँ पर लगातार तंत्र को इस मुद्दे के बारे में सूचित किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. शिक्षक के अभाव के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इस समस्या को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है. शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग जोर पकड़ने लगी है. શાળાની અંદર હું ગોપાલગ્રામ કુમાર શાળામાંથી આચાર્ય રજનીકાંતભાઈ દાપરા બોલું છું અને એમાં અમારી શાળામાં હાલ એક શિક્ષકની લગભગ ઘણા સમયથી જગ્યા હોય હજી પૂર્તતા થઈ નથી અને અમારી શાળામાં સંખ્યા ઓછી હોવાના કારણે જે જ્ઞાન સહાયક મળવા જોઈએ તે મળ્યા નથી અને શિક્ષકની જગ્યા હોવાના કારણે અમારે એકથી 5 વર્ષ સંભાળવા ઘણા અઘરા થઈ પડે છે. તો સરકારશ્રીને અમારી ખાસ વિનંતી કે ઝડપથી શિક્ષકોની ભરતી કરે અને તેમને નિમણૂક આપે અને અમારી શાળામાં શિક્ષક આવી જાય તો શાળાનું કાર્ય ખૂબ સરસ અને સુંદર થઈ શકે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात.
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में माधवपुर के विश्व प्रसिद्ध गैर मेले का आयोजन होने जा रहा है। वडोदरा में 2 अप्रैल को माधवपुर गैर मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। इस मेले में लगभग 400 कलाकार भाग लेंगे और यह आयोजन अकोटा स्टेडियम में होगा, जिसमें लगभग 5000 लोग उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। वडोदरा मुकामे पण 2 એપ્રિલ એ સાંજે 7 વાગે એનો પ્રી ઇવેન્ટ છે
એટલે 2 એપ્રિલ સાંજે 7 વાગે અકોટા સ્ટેડિયમ જે છે વડોદરાનું ત્યાં એનો પ્રી ઇવેન્ટ છે. ત્યાં પણ બહોળી સંખ્યામાં લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે એ કાર્યક્રમને નિહાળે એવી બધાને જાહેર આમંત્રણ છે. સાથોસાથ મુખ્ય બાબત એ છે કે નોર્થ ઇસ્ટના 200 કલાકારો અને ગુજરાતના 200 કલાકારો બંને કલાકારો નોર્થ ઇસ્ટ અને ગુજરાત કલાકારો ત્યાં સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ પ્રસ્તુત કરવાના છે. બધા નગરવાસીઓને જાહેર નિમંત્રણ છે કે ત્યાં આવે. ગુજરાત રાજ્ય રમતગમત યુવા સાંસ્કૃતિક સમિતિ અને પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને બધા સાથે મળી અને જે આ ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગ દ્વારા, ગુજરાત યુવક બળ અને ટુરિઝમ વિભાગ દ્વારા માધવપુરનો મેળો એટલે કે ગેરનો મેળો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણીજીના જે વિવાહ થયા હતા એ સ્થળ એટલે કે માધવપુર. આ માધવપુરમાં જે મેળાનું આયોજન થતું હોય છે, આદરણીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી દ્વારા આ માધવપુરના મેળામાં બની શકે કે બધાને ત્યાં જવાનું શક્ય ન બનતું હોય ત્યારે એક એવી પ્રી ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે જેના થકી ગુજરાતના અમુક શહેરોમાં, અલગ અલગ શહેરોમાં પણ આ માધવપુરના મેળા જેવો માહોલ થાય અને સ્થાનિક નાગરિકો આ માધવપુરના મેળાને પોતાના શહેરમાં માણી પણ શકે. ત્યારે વડોદરા શહેર પણ એમાંનું એક શહેર છે કે જ્યાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજનના પૂર્વ તૈયારીના ભાગ રૂપે આજરોજ અલગ અલગ સંસ્થાઓને, ધાર્મિક સંસ્થાઓ હોય જેમ કે વિવાયો છે, વિપો છે, BAPS છે, બ્રહ્મા કુમારીસ છે, હરિપ્રબોધન સ્વામીજીનું ગ્રુપ છે, કે આ બધા જ અલગ અલગ ધાર્મિક સંસ્થાઓ સાથે સાથે કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ છે, નિરંકારી જે મંડળો છે. તો વડોદરા જે કલા અને સંસ્કૃતિની નગરી છે ત્યારે કલા સાથે જોડાયેલી અલગ અલગ સંસ્થાઓ કે પછી શાળા હોય, CA સેલ હોય કે બધા અલગ અલગ એટલે કહી શકાય કે અલગ અલગ જે બધા સંસ્થાઓ મળી અને વડોદરા નામનું જે આખું રંગોળી રચાતી હોય આ બધાને જ બોલાવી અને આપણે આયોજનમાં કેવી રીતે વધારે વ્યવસ્થિત આયોજન કરી શકીએ જેથી આપણા વડોદરા શહેરના નાગરિકોને આ માધવપુરનો મેળો એટલે કે ગેરના મેળાનું મનોરંજન પણ મળે, આનંદ માણી શકે અને ત્યાં એ લોકો મુલાકાત પણ કરી શકે. આના માટે બુક માય શો પર એક રજીસ્ટ્રેશન કરવાની પ્રક્રિયા છે. લગભગ 5000 જેટલા અહીંયા મુલાકાતીઓ આવશે એવો એક અંદાજ છે. માટેનું બધું પ્લાનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. गुजरात के वडोदरा के शिनोर में मौसम में बदलाव से किसान परेशान हैं। वडोदरा के शिनोर क्षेत्र में मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक मध्य गुजरात में मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है। इस बदलाव से किसानों में चिंता की लहर दौड़ गई है। मारा गामनी अंदर कपास, तुवर, डांगर જેવી ખેતી જેવા કે એરંડા છે, હવે કપાસના ફૂલ એવા ખીલી રહ્યા છે કે આ વાતાવરણના લીધે ખેડૂતના જીવ અને અમારા જીવ પણ એવા અદ્ધર છે કે ભગવાન આ વાતાવરણ ખુલ્લું કરી દે એવી અમારા ભગવાન પાસે प्रार्थना કરીએ છીએ। वहीं डभोई में भी मौसम में बदलाव देखा गया। अचानक बादल छाने से बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के डीसा की एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। गुजरात के बनासकांठा के डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मृत्यु हो गई। 3 की हालत गंभीर है, वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल हैं। फैक्ट्री डीसा तहसील के धुनवा रोड पर है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। विस्फोट के दौरान मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि कई मजदूरों के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में 5 से 6 घंटे लगे। हादसे के शिकार सभी मृतक और घायल मजदूर मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया गांव के रहने वाले हैं। फैक्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक अभी 2 दिन पहले ही मजदूरी के लिए वे यहां आए थे और पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है।
જે બનાવ બન્યો છે બહુ દુઃખદ છે. મેં આદરણીય સીએમ સાહેબને જઈને મારે વાત થઈ છે. સીએમ સાહેબે સૂચના આપી છે તો આગળ સ્થાનિક કલેક્ટરશ્રી અને બધા જ અધિકારીઓની ટીમ તો આગળ કેટલાય ટાઈમથી કામ કરી રહી છે અને હું પણ દિશા મુકામે જઈ રહ્યો છું. બચાવની કામગીરી ચાલુ છે. કોઈ પણ દોષી થશે અને સરકાર છોડશે નહીં.